Good morning, students. Now, today I am going to start chapter 22 Perimeter, Area and Volume. First, I explain the meaning of perimeter. Perimeter is the sum of the length of all sides of a closed figure. Suppose, for example, if the figure is this, it means the length of all sides. The sum of the length of all sides, that is the perimeter. इस सारी साइड्स का अगर हम सम करते हैं तो वो क्या कहलाता है? पेरीमीटर. The unit of perimeter is same as the unit of length. जो लेंथ की यूनिट होती है वही हमारी पेरीमीटर की भी यूनिट होती है. Now next is the perimeter of triangle. Perimeter of a triangle. Perimeter of a triangle is the three-sided closed figure. This is a triangle. How many sides in a triangle? 3 sides, and this is a closed figure. So we say a triangle is a three-sided closed figure, that is A, B and C. So 3 sides we write AB plus BC plus CA. This is the perimeter of a triangle. The sum of the lengths of sides. The perimeter of a triangle, this is the symbol of a triangle, is equals to sum of the lengths of sides. We can say sum of the lengths of the sides. This is the perimeter of a triangle. Perimeter of a triangle. How you can find out the perimeter of a triangle? If the question comes that you find out the perimeter of a triangle, if sides is given, then you write this formula: perimeter of a triangle is equals to sum of the lengths of the sides. It means all the 3 sides is given. जब हमें तीनों sides given होगी और तो हम कैसे निकालेंगे इस ट्रायंगल का पेरीमीटर? उन तीनों sides को प्लस करके. तो this formula you should remember, that is perimeter of a triangle is equals to sum of the length of the sides. Next is perimeter of an equilateral triangle. Now the perimeter of an equilateral triangle figure is this. Now you know that in equilateral triangle all sides are equal. इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं. इट मीन्स AB प्लस A. यहाँ पे ये जो ट्रायंगल दिया हुआ है AB प्लस BC प्लस CA, तो इसमें सारी साइड्स किसके इक्वल हो जाएंगी? AB के. मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल. जो इसकी लेंथ गिवन है AB की, वही हमारी BC की भी लेंथ होगी और वही हमारी AC की भी लेंथ होगी. तो वी राइट द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 3A. यहाँ पे ये कैसे आया इसे देखिए. AB प्लस AB. इट मीन्स तीनों साइड इक्वल थी, इसलिए हमने इसको AB से लिख दिया तीनों साइड्स को. और इनके आगे क्या है? 1 है, तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3. और हमने मल्टीप्लाई AB मीन्स ब्रैकेट में लिख दिया, इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है. तो दिस इज आवर आंसर 3AB. तो द फॉर्मूला ऑफ
मीन्स ये क्या है आपकी ए बी क्या है, एक साइड है, तो हमारा पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय साइड. So you should remember this formula also. Perimeter of an equilateral triangle is equals to 3 multiplied by side. Perimeter of rectangle. Now you understand all of you know about rectangle. Rectangle is a closed figure in which how many sides are there? 4 sides. So a rectangle is 4-sided closed figure in which opposite sides are equal. एक rectangle है जिसके अंदर 4 sides हैं और उसकी opposite sides equal है. So this figure we say a rectangle. Here 4 sides A, B, C and D. Now we write the perimeter of a rectangle is, that is AB plus BC plus CD plus D. 4 sides हैं rectangle की, तो हमने ये 4 sides लिख दी. Perimeter means the sum of all the 4 sides. Now we know that opposite sides are equal. तो AB के अपोजिट में कौन सी साइड आ रही है, DC, है ना. तो मीन्स DC जहां पे लिखा है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, CD और DC बोथ आर द सेम. उसकी जगह हम AB लिख सकते हैं क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल है. तो AB प्लस BC प्लस, अब CD की जगह हमने क्या लिख दिया, AB, क्योंकि ये वाली साइड किसके इक्वल है, इस साइड के अपोजिट साइड्स हो रही है, तो यहाँ पे हमने इसमें AB लिख दिया. अब आप देखेंगे AD है, AD जो है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, BC, क्योंकि AD वाली साइड किसके इक्वल आ रही है, BC के, तो हम AD की जगह क्या लिख सकते हैं, BC. AD and DA both are the same, so we write in place of DA that is BC and in place of CD we write AB. हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, because we know the property of rectangle that opposite sides are equal. हमारी ये दोनों साइड इक्वल है, तो इसकी जगह हमने ये लिख दे, चाहे इसकी जगह हम ये लिख दें. Now because we calculate the formula, हम फॉर्मूला बना रहे हैं इसलिए हम इस तरीके से आपको इसको कैलकुलेट करना सिखा रहे हैं. Now here AB plus AB क्या हो जाएगा, 2A. BC plus BC क्या हो गया, 2BC. अब आप देखेंगे दोनों में क्या चीज हमें कॉमन नजर आ रही है, 2, तो इसको हम बाहर ले लेंगे और ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिख देंगे, AB plus BC. मतलब इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई. और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वाली टर्म्स आ जाएंगे हमारी, 2AB प्लस 2BC. तो यहाँ ये दोनों कॉमन था, हमने यहाँ निकाल दिया और इसको लिखा 2AB प्लस BC. तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब आप देखिए जो लॉन्गर साइड्स हैं दैट इज द लेंथ एंड द शॉर्टर साइड्स इज द ब्रेड्थ. ये हमारी लॉन्गर साइड क्या हो जाएगी, लेंथ, और शॉर्टर साइड क्या हो जाएंगी, ब्रेड्थ. तो ये फॉर्मूला क्या आ गया हमारा, 2AB इज द क्या, लेंथ, एंड प्लस BC हमारी क्या है, ब्रेड्थ. We write 2 bracket means यहाँ क्या है, multiply length plus breadth. The perimeter of rectangle is 2 multiply length plus breadth. The formula is length plus breadth. Clear? तो perimeter of rectangle का formula क्या हुआ, that is 2 multiply length plus breadth. So all of you learn this formula by heart. ये मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया कि इसको कैसे कैलकुलेट करते, ये फॉर्मूला कैसे आया. आपने 4th स्टैंडर्ड में सीखा था कि हम डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न कर रहे थे, तो ये कैसे आता है एक्चुअल में, इसको कैलकुलेट करना हमने यहाँ सिखाया. So now you can understand the formula of perimeter of a triangle, perimeter of an equilateral triangle, perimeter of rectangle.
in which all sides are equal. Now you see this is the figure of square in which all sides are equal. That is A, B, C, D. Now we write the perimeter of square is equals to first AB plus BC plus CD plus DA. Now here you see all sides are equal. सारी ही साइड्स इक्वल है, मतलब ए बी किसके इक्वल है, बी सी किसके इक्वल है, सी डी किसके इक्वल है, ए डी के. तो हम यहाँ पर सबको इससे रिप्लेस कर रहे हैं ए बी सी. हमने यहाँ सबको सारी साइड्स को किससे रिप्लेस कर दिया, ए बी सी, बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल. ये सारी साइड्स इक्वल है. नाउ यू सी इसके आगे कितना है, 1, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है. तो 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4 और हमारा ये सब कॉमन है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ए बी. इट मीन्स 4AB. और ए बी हमारी क्या है स्टूडेंट्स, साइड है. तो ए बी की जगह हमने क्या लिख दिया, साइड. तो हमारा फॉर्मूला कम्स पेरीमीटर of a square is equals to 4 multiplied by side. तो पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर का क्या फॉर्मूला हुआ, 4 multiplied by side मीन्स 4 साइड. जो भी साइड गिवन है उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर. तो नाउ स्टूडेंट्स, you remember all this formula. Again I revised. That is the formula, that is the first formula, that is perimeter of a triangle, that is sum of the lengths of the sides. Then perimeter of an equilateral triangle is equals to 3 multiplied by side. Then perimeter of a rectangle is equals to 2 multiply length plus breadth. Then perimeter of a square is equals to 4 multiplied by side. Now all of you learn all this